Assalamu alaikum, ni hao, haula, and bonjour. Hello everyone. Comment allez-vous? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे. सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है, इट इज़ अबाउट माई मेज़ों लाइक माई हाउस. दिस इज़ द सेम ऐसे, या फिर मैं से कहूँगी वी नीड टू राइट द सेम ऐसे एज वी हैव रिटन दिस इन आवर चाइल्डहुड ऑलरेडी. आपको याद होगा कि हम अपने हाउस के बारे में, घर के बारे में, अपने पेट के बारे में या फ्रेंड्स के बारे में ऐसे लिखा करते थे. द सेम थिंग वी नीड टू डू हियर but in French. Okay, so for that we need a vocabulary, and first of all we need to read a paragraph, okay, or a text, ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह से लिखा जाता है my house in French, किस तरह से my house जो है लिखा जाता है. So I'm coming up with a little paragraph. First of all, let me tell you that how to say my house. It's ma maison. Okay, ma maison, ma maison, ma maison mean my house. So here's the paragraph for you guys. Let me read it for you. First of all, I will read it in French, and then after all reading we will do yes, exactly, the translation. Okay, तो चलो start करते हैं. Voici ma maison. Voici ma maison. I hope you will read after me, ताकि आपको भी पढ़ना है, ठीक है. Voici ma maison. J'y habite. J'y habite avec mes parents. J'y habite avec mes parents et ma soeur. Ok, et ma soeur. Avec, c'est une grande maison. C'est une grande maison avec 13 étages. C'est une grande maison avec 13 étages. Je partage ma chambre avec ma soeur. Je partage ma chambre avec ma soeur. Nous avons un grand jardin. Nous avons un grand jardin avec un petit lac. Ce qui est super. अब थोड़ा इसे मैं फास्टली पढ़ूँगी, सेम इन फ्रेंच, और रिपीट नहीं करूँगी. लाइक इस तरह नहीं, स्लोली पढ़ूँगी जैसे पहले पढ़ रही थी. थोड़ा सा फास्ट पढ़ूँगी ताकि you should know in flow how it seems or how it can pronounce. Okay, voici ma maison. J'y habite avec mes parents et ma soeur. C'est une grande maison avec 3 étages. C'est une grande maison avec 3 étages. Je partage ma chambre avec ma soeur. Nous avons un grand jardin avec un petit lac. Okay, ce qui est super. So now with the translation. Voici ma maison. Here is my house. Voici ma maison. Here is my house. J'y habite. J'y, अब जब ये y के साथ जो j के साथ जो y है, it means वो लिखना चाह रहे हैं je. जब je इसलिए नहीं लिख सकते because e and y इकट्ठा एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए क्या किया है उन्होंने, y is a vowel as well, as you know, y is a vowel as well, इसलिए 2 vowel एक साथ नहीं आ सकते. as I told you before कि a, e, I, o, u, y and h, these are vowels in French. Okay, so a, e, I, o, u तो same like English, but y, h, it's an extra one जो आपको याद करने हैं. कि याद रखने के लिए you need to memorize them, और सब कहोगे रट्टा लगा लीजिएगा कि y and h are also vowels in French, except in same the English vowels like a, e, I, o, u same like English, and then y and h. ठीक है, अब e भी vowel था और y भी vowel था, इसलिए एक vowel हमें रिमूव करना था, जो कि हमने j के बाद वाला vowel रिमूव कर दिया, and then we put an apostrophe and after that y. तो जी, it pronounce जी. जी mean
I there. ओके, जी आई देयर। अगर मैं इसको वैसे पढ़ूँ, मतलब सर्टनली पढ़ूँ इसको, तो बढ़ेगा जी habite avec mes parents, I live there with my, j'y habite, I live there, j'y habite, I live there avec, with mes parents, my parents, and ma soeur, my sister. C'est une maison, c'est mean this is, or c'est une maison, it's a house avec 3 étages, with 3, you can say that stories or floor. Okay, I think floors are most appropriate word. C'est une maison avec, with 3 étages. This is a house with 3 floors, right? Je partage ma chambre, I share. Je partage, I share ma chambre, my room, avec ma soeur, with my sister. I share my room with my sister. Nous avons, we have un grand jardin. We have a big garden. Okay. Nous avons, we have un ek. Okay, or as I've already told you, que je partage ma chambre avec ma soeur. I share my room with my sister. Nous avons, we have un grand jardin. We have a big garden avec un petit lac, with a little pool. Okay, ce qui est super, which is superb or amazing. Okay, which is superb. This was the first paragraph. Let us move to the next one. Nous avons dans un appartement de 5 pièces. Nous habitons dans un appartement de 5 pièces, dans un petit immeuble. Il y a une pelouse énorme. J'y joue souvent avec mes amis. J'y joue souvent avec mes amis. J'ai ma propre chambre. C'est absolument fantastique. Ok, c'est absolument fantastique. Ok, again, nous habitons dans un appartement de 5 pièces. Ok, dans un petit immeuble. Il y a une pelouse énorme. J'y joue souvent avec mes amis. J'ai ma propre chambre. C'est absolument fantastique. Okay? Let us do translation here. Nous habitons, we live, dans un appartement de 5 pièces. We lived in an apartment of 5 rooms. Okay, we lived in an apartment of 5 rooms, dans un petit immeuble, in a little building, or in a small building, dans un petit immeuble होती है building, in a little building. Il y a une pelouse énorme. Okay, il y a une pelouse énorme. There is a huge what you will say, immeuble. Yes, it's lawn. Yeah. Il y a une pelouse énorme. There is a huge lawn. J'y joue souvent avec mes amis. J'y joue, I play there, souvent, often. J'y joue souvent, I play there often, avec mes amis, with my friends. Okay,
J'ai ma propre chambre. I have my own room. J'ai ma propre chambre. I have my own room. C'est absolument fantastique. It's absolutely fantastic. Okay? C'est absolument fantastique. It's absolutely fantastic. So now let's walk to the city area. Okay. J'y habite une chaumière. J'y habite une chaumière en pleine campagne. J'y habite une chaumière en pleine campagne avec ma famille. Avec ma famille, c'est très calme. C'est très calme. De ma fenêtre, je vois beaucoup de fleurs. Je vois beaucoup de fleurs. So I lived in a cottage. In the middle of a countryside in the country. Okay. Avec ma famille, with my family, c'est très calme. With my family, this is very calm. Okay. C'est avec ma famille, c'est très calme. Okay, this is very calm. De ma fenêtre, from my window, je vois beaucoup de fleurs. I can see a lot of flowers. Okay. C'est très calme. It's very calm. De ma fenêtre, from my window, je vois beaucoup de fleurs. I can see a lot of flowers. Okay. Now here are some vocabulary if you can find me. Okay. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने दी हैं जिसको देख के आपने बताना है कि इन तीनों पैराग्राफ्स में से कौन सा वर्ड इन सब के लिए यूज़ हुआ, मतलब सबके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज़ किया गया. आई होप यू विल गेट इट until I will find for you. So there you go. It's la salle de bain. La salle de bain. First one, le salle de bain. La cuisine. La cuisine. La cuisine. Le jardin. Le jardin. Le jardin. Le sous-sol. Le sous-sol. La chambre. La chambre. Here is the chambre. La chambre. La salle de séjour, or you can say le salon. Both words you can use for this thing. Le salle de séjour or le salon. Le salle de séjour or le salon. Next, le salle à manger. Le salle à manger. Le bureau. Le bureau. Le garage. Le garage. Les toilettes. Les toilettes. Le jardin. Le jardin. Le grenier. Le grenier. Okay, so le salle de bain, washroom. Le salle de bain, it's a washroom or bathroom, you can say. Le salle de bain, bathroom. Le salle de bain, bathroom. La cuisine, kitchen. La cuisine, kitchen. Le jardin, garden. Le jardin, garden. Le sous-sol. Le sous-sol is basement. Le sous-sol, basement. La chambre, room. La chambre, room. Le salle de séjour or le salon, it's a living room. Le salle de séjour or le salon, it's mean living room. La salle à manger, dining room.
la salle à manger, dining room, le bureau, the office, le bureau, the office, le garage, the garage, le garage, the garage, les toilettes, the toilet. Actually, the toilet word is plural, that is why they put les, and because it's already s at the end of the toilet, that is why they use les word, not le or la. Les toilettes, les toilettes, le jardin, the garden again, le grenier, the attic, le grenier, the attic. So here are some floors you need to explain, or you need to say that, or you should know how to call them in French. So here we need to do a thing. You need to revise after me, or you need to say that after me. Un sous-sol in a basement. Au rez-de-chaussée on the ground floor. Okay, rez-de-chaussée on the ground floor. Au premier étage on the first floor. Au premier étage on the first floor. Au deuxième étage on the second floor. Au deuxième étage on the second floor. Au deuxième étage on the second floor. And will you please tell me or help me how to say the third floor? Yes, au troisième étage. And how to say the fourth floor? Au troisième étage on the third floor, and au quatrième étage on the fourth floor. So here's an essay for you, ठीक है, जो कि निकोला ने लिखा है, La maison de Nicolas, the house of the Nicolas, ठीक है, Le maison de Nicolas, the house of the Nicolas. और इसमें जो बात होगी, it will be les pièces, les étages and les meubles. ओके, les pièces, रूम्स, les étages, इसकी स्टोरीज, कितनी स्टोरीज रूम है, कितने स्टोरी घर है, और les meubles, फर्नीचर के बारे में. ओके, ma maison est assez grande au rez-de-chaussée. Ma maison est assez grande au rez-de-chaussée. Il y a une grande salle de séjour. Il y a une grande salle de séjour avec un canapé, 3 fauteuils. Okay. Again, ma maison est assez grande au rez-de-chaussée. Il y a une grande salle de séjour avec un canapé, 3 fauteuils et un téléphone, mais il n'y a pas de téléphone. C'est une pièce très confortable. Mais il n'y a pas de téléphone. C'est une pièce très confortable. Nous avons aussi une salle à manger avec une table et 6 chaises. C'est dans cette pièce qu'on mange ensemble tous les soirs à 20h. Ok? Dans la cuisine aussi. I'm gonna read it for you again. Ma maison est assez grande. Au rez-de-chaussée, il y a une grande salle de séjour avec un canapé, 3 fauteuils et un téléphone. Mais il n'y a pas de téléphone. C'est une pièce très confortable. C'est une pièce très confortable. Nous avons aussi une salle à manger avec une table et 6 chaises. Ok. Nous avons aussi une salle à manger avec une table et 6 chaises. C'est dans cette pièce qu'on mange ensemble tous les soirs à 20h. Ok? Tous les soirs à 20h. Dans la cuisine aussi au
rez-de-chaussée. Il y a une cuisinière électronique, un frigo dans le coin et au Il y a une cuisinière électronique, un frigo dans le coin et un four à micro-ondes. Ok, ma mère n'aime pas les micro-ondes. Elle pense que ce n'est pas bon pour la santé. Mais moi, je trouve ça pratique, heureusement. Ok. Nous avons aussi un lave-vaisselle. Au premier étage, nous avons 3 chambres et une grande salle de bain avec une douche, un baignoire et un lavabo et des toilettes, bien sûr. Au sous-sol, il y a une cave avec une machine à laver. Et devant la maison, il y a un grand jardin avec une pelouse, des fleurs et des arbres. Je n'aime pas le jardinage. Alors je voudrais une table de bébé foot dans le jardin pour jouer au bébé foot en plein air un jour peut-être. Ok, so here you need to do with this complete in French and in English. What you need to do, you need to write les pièces, les étages, les meubles. Les pièces जो कि लिखा हुआ है in red, okay, in red, और les étages जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है highlight in a different color or circle. क्या लिखा हुआ है? Les étages, it's in purple. Les étages, it's in purple. Okay, and les meubles, like the furniture, it's in green. Yeah, it's in green. So what you need to do, you need to write that list over here. You need to make the list like this. ठीक है, जिसमें आपने एक जगह पे les लिखना है, एक जगह पे les étages और les meubles, इन सबको word to word यहाँ पे लिख देना, और you can write that in English as well. ठीक है. So here's one more thing you need to do. There's a green part you can see and there is a red part. So यहाँ पे क्या करना है? In green part you need to do the list what you have, or in the red part you need to write the list you don't have. Okay, और मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि आपने सेंटेंस बनाना है कि what you have in your house or what you don't have, or you need to make a phrase or what you don't have. Okay, like if you have dans ma maison il y a, there's an example, you need to write dans ma maison, in my house il y a, there is a, okay, and dash dash, and then chez nous, in our house, yeah, in our place il y a, there's a, in our house or in our place there is a, nous avons, we have, or third one is nous avons, we have. There I'm giving you 3 options. ठीक है, like in 3 ways you may make your sentence. और इसी तरह से dans ma maison il n'y a pas de, okay, in my house there is not what, okay, ये लिखना है कि what is not there. chez nous il n'y a pas de, at our place it has not, okay, and इसी तरह से nous n'avons pas de, we don't have the, okay. So क्या करना है कि आपने you need to make 3 sentences with each, ठीक है, with each style. मैंने 3 styles आपको यहाँ पे दिए हैं, यानी dans ma maison il y a
il y a un dash. Chez nous, il y a un dash. And nous avons, il y a un dash. And same with the negation. Dans ma maison, il n'y a pas de. Chez nous, il n'y a pas de. Or nous avons, il n'y a pas de. Yani, in negative sentence, you can see. In a negative sentence, you can use de instead of un or une. For example, il n'y a pas de jardin. There is not a garden. ठीक है? Il n'y a pas de jardin. There is not a garden. So, what you need to do, you need to write a sentence like dans ma maison, il y a a dash and like la salle de bain, la salle à manger or whatever. क्या लिखना कैसे है? Let me write an example for you, so you will write easily. कैसे? Dans ma maison, il y a 3 grandes chambres. Ok? Dans ma maison, il y a 3 grandes chambres. In my house, there are big 3 rooms. ओके इनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए. एंड क्या लिखना है? दो मा मेजो इलिया थ्वा गॉन्ड. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू कि हाउ यू विल राइट 3 सेंटेंसेस. किस तरह से? दो मा मेजो इलिया थ्वा गॉन्ड chambre. In my house there are three big rooms. Okay, but il n'y a pas de, क्या कहूँ, like you can say il n'y a pas de so you can say कि dessous-sol. Okay, like you can say dans ma maison il y a 3 chambres mais il n'y a pas de sous-sol. And यानी 3 rooms हैं but क्या नहीं है? We don't have a basement. Same like this. Chez nous il n'y a pas de grenier. Cependant nous avons nous n'avons un grand salon. सब क्या किया था हमने? अब सेकंड सेंटेंस नेगेशन से स्टार्ट कर दिया था. क्या किया था? Chez nous il n'y a pas de grenier. Cependant nous avons un grand salon. So chez nous il y a pas de grenier. We don't have a attic. Cependant, however, nous avons un salon or grand salon. Okay, like chez nous, at our home or at our place, there is not attic. However, we have a big living room, right? You can see here the same thing you need to make. Same इसी तरह से you need to make 3 sentences. Dans ma maison, il y a 3 grandes chambres, mais il n'y a pas de sous-sol. Or second, chez nous, il n'y a pas de grenier. Cependant, nous avons un grand salon. तो किस तरह बनाना है? Dans ma maison, il y a, chez nous, il y a, nous avons dash. Dans ma maison, il n'y a pas de, chez nous, il n'y a pas de, और chez nous avons और इसी तरह से नेगेशन में तो ma maison il n'y a pas de, chez nous il n'y a pas de, nous n'avons pas de. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाई, अगेन रिपीट कर देती हूँ. Dans ma maison il y a 3 grandes chambres mais il n'y a pas de sous-sol. और इसी तरह से
यानी दोनों सेंटेंस को मैंने एक साथ लिख के फिर एक सेंटेंस बनाया है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है, इन तीनों वर्जन्स को यूज़ करते हुए आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। लाइक द अदर वन वाज chez nous il n'y a pas de grenier cependant nous avons un grand salon. So here is the thing, what you need to do, you can write it down in the comment below and इसी तरह से 3 सेंटेंसेस कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, और आई विल सी एंड लेट्स सी हु विल मेक द गुड वन, ठीक है। जैसा कि हमने अभी तक पैराग्राफ्स पढ़े हैं, आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ नॉट देयर। यू नीड टू मेक 3 सेंटेंसेस विद yes and with the negations and with what do you have in your list and what you do not have. Okay, 3 sentences again I am saying and I will be waiting for you. Au revoir, तब तक के लिए au revoir, bonne journée, bisous bisous.